this lecture, we will continue from the Ethical Standard 3.07 of Human Relation, Third Party Request for Services. We will discuss rest of the standard including exploitative relationship, cooperation with other professionals, informed consent, psychological services delivered to or through organization, and interruption of psychological services. Let's discuss Standard 3.07 Third Party Request for Services. अक्सर थर्ड पार्टी साइकोलॉजिस्ट से रिक्वेस्ट करती हैं कि वो उनको अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करें, असेसमेंट या साइकोथेरेपी दें। तो ऐसे में साइकोलॉजिस्ट को चाहिए कि वो अपनी सर्विसेज के आगाज़ में ही थर्ड पार्टीज़ और क्लाइंट को अपने रोल के बारे में और नेचर ऑफ रिलेशनशिप के बारे में आगाह करें और साथ ही साथ ये भी वाज़िया करें कि उनसे ली गई इंफॉर्मेशन किसके साथ शेयर होगी। So this standard says that when psychologists agree to provide services to a person or entity at the request of a third party, psychologists attempt to clarify at the outset of the services the nature of relationship with all individuals or organization involved. This clarification includes the role of psychologist as a therapist, consultant, diagnostician, or expert witness. Moreover, an identification of who is the client, the probable use of the services provided or the information obtained, and the fact that there may be limits to confidentiality. मिसाल के तौर पर अगर एक कंपनी साइकोलॉजिस्ट को हायर करती है कि वो एम्प्लॉयज़ की असेसमेंट करे, तो साइकोलॉजिस्ट एम्प्लॉयज़ को बताएगा कि वो इस कंपनी के लिए काम कर रहा है। वो एम्प्लॉयज़ साइकोलॉजिस्ट के क्लाइंट्स होंगे और उनसे ली गई मालूमात और रिजल्ट्स कंपनी के साथ शेयर किए जाएंगे और कंपनी इस इंफॉर्मेशन को हायरिंग डिसीजन के लिए इस्तेमाल करेगी। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड 3.08 is related to exploitative relationship. According to this standard, psychologists do not exploit person over whom they have supervisory, evaluative, or other authority, such as their clients, patients, students, supervisees, research participants, and employees. तो ये स्टैंडर्ड साइकोलॉजिस्ट को रोकता है कि वो अपने अंडर काम करने वालों से ज़ाती मफाद ना लें या उनसे नाजायज़ काम ना लें या अपने ज़ाती काम उनसे ना करवाएं और अपने प्रोफेशनल रिलेशनशिप को एक्सप्लॉइट ना करें। मसलन अगर एक साइकोलॉजिस्ट अपने स्टूडेंट से या असिस्टेंट से अपने ज़ाती काम ले और उस पर उनको मुआवजा भी ना दे या उनसे ओवर टाइम ले, तो वो इस एथिकल स्टैंडर्ड की वायलेशन कर रहा है। इसके अलावा अपने ज़ाती कारोबार को चलाने के लिए अपने स्टूडेंट्स या पेशेंट्स का इस्तेमाल करना और उनसे महंगे गिफ्ट्स वगैरह लेना। इस एथिकल स्टैंडर्ड की वायलेशन अक्सर बहुत से दूसरे स्टैंडर्ड्स को भी वायलेट कर सकती है। मसलन अगर साइकोलॉजिस्ट ने अपने क्लाइंट्स को एक्सप्लॉइट किया है और उनके साथ किसी किस्म का सेक्सुअल रिलेशनशिप रखता है, तो वह ना सिर्फ इस स्टैंडर्ड की वायलेशन कर रहा होगा बल्कि एथिकल स्टैंडर्ड ऑफ मल्टीपल रिलेशनशिप की वायलेशन भी कर रहा होगा। हमें इस सिनेरियो में कुछ और केसेस भी देखने को मिल सकते हैं। मसलन अगर एक स्कूल साइकोलॉजिस्ट ने किसी दूसरे साइकोलॉजिस्ट से फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज ली कि वो स्कूल के बच्चों को साइकोलॉजिकल टेस्टिंग प्रोवाइड करे, लेकिन वो स्टूडेंट से फ़ी चार्ज करता है, तो दिस वुड ऑल्सो बी एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लॉयटेटिव रिलेशनशिप एंड चार्जिंग अननेसेसरी फीस। स्टैंडर्ड 3.09 Cooperation with other professionals. This standard says that when indicated and professionally appropriate, psychologists cooperate with other professionals in order to serve their clients or patients effectively and appropriately. माहिरीन नफ्सियात के पास असेसमेंट या काउंसलिंग के लिए आने वाले अफराद को अक्सर मेडिकल, एजुकेशनल या लीगल हेल्प की ज़रूरत होती है, तो साइकोलॉजिस्ट के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो दूसरे प्रोफेशंस के साथ कोलैबोरेट करें और क्लाइंट्स को बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करें। सो ये स्टैंडर्ड साइकोलॉजिस्ट से डिमांड करता है कि वो दूसरे प्रोफेशंस के साथ कोऑपरेट करें और जब मुनासिब लगे कोलैबोरेशन करें, लेकिन वाज़िया रहे कि साइकोलॉजिस्ट जब भी दूसरे प्रोफेशंस के साथ कोऑपरेट करेंगे
तो उनके साथ एक क्लियर एग्रीमेंट साइन करेंगे, अपने रोल की नेचर को क्लियर करेंगे, इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, सो दे कैन सर्व इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ देयर क्लाइंट्स. Standard 3.10 is related to informed consent. But here the question arises, what is informed consent? Informed consent is basically a kind of agreement between the psychologist and the client in which they communicate in detail regarding the services provided, every duration of the services, sessions, or treatment, etc. And psychologists cannot withhold this right of the client and seek formal permission from the client before conducting intervention or assessment. So Standard 3.10a states that when psychologists conduct research or provide assessment, therapy, counseling, or consulting services in person or via electronic transmission or other form of communication, they obtain the informed consent of the individual or individuals using language that is reasonably understandable to that person or persons, except when conducting such activities without consent is mandated by law or governmental regulations or as otherwise provided in this ethics code. यानी ख्वाह साइकोलॉजिस्ट इन पर्सन थेरेपी या असेसमेंट प्रोवाइड कर रहे हों या ऑनलाइन मोड इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हों, तो उनको चाहिए कि वो अपने क्लाइंट से इन्फॉर्म कंसेंट लें और ये इन्फॉर्म कंसेंट उनके क्लाइंट्स की लैंग्वेज में होना चाहिए जिसको वो अंडरस्टैंड कर सकें. Standard 3.10b says that for persons who are legally incapable of giving informed consent, psychologists nevertheless provide an appropriate explanation. Number 2, seek individual assent. Number 3, consider such person preferences and best interest, and obtain appropriate permission from a legally authorized person if such substitute consent is permitted or required by law. Moreover, when consent by a legally authorized person is not permitted or required by law, psychologists take reasonable steps to protect the individual rights and welfare. यानी बच्चों के साथ काम करते हुए जो कि 18 साल से कम हों या अडल्ट्स हों जो कि लीगली इनकेपेबल हों और कॉन्सेंट ना दे सकें, तो साइकोलॉजिस्ट को चाहिए कि वो उनसे असेंट ले और जो लीगली ऑथराइज पर्सन हैं उनसे कॉन्सेंट ले. मसलन उनके केयर टेकर या उनके पेरेंट्स, उनसे कॉन्सेंट लिया जाए और उनको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की जाए और क्लाइंट्स को राइट दें कि वो जब चाहे रिसर्च या असेसमेंट को छोड़ सकता है. According to Standard 3.10c, when psychological services are court-ordered or otherwise mandated, psychologists inform the individual of the nature of anticipated services, including whether the services are court-ordered or mandated and any limit of confidentiality before proceeding. यानी अगर माहिरीन नफ्सियात कोर्ट के ऑर्डर पर क्लाइंट की असेसमेंट कर रहे हों तो उनको अपने क्लाइंट्स को बताना चाहिए कि ये असेसमेंट क्यों की जा रही है और उनसे ली गई मालूमात अदालती कार्रवाई में शामिल की जाएगी और साथ ही साथ उनको ये भी बताया जाए कि ये असेसमेंट कोर्ट के ऑर्डर्स के साथ की जा रही है. Standard 3.10d demands proper documentation from psychologists, saying that psychologists appropriately document written or oral consent, permission and assent. यानी ये स्टैंडर्ड साइकोलॉजिस्ट से डिमांड करता है कि वो प्रॉपर रिटन या ऑरल कॉन्सेंट लें. रिटन कॉन्सेंट में वो क्लाइंट से कोई कॉन्सेंट लेटर, डॉक्यूमेंट या इजाज़तनामा साइन कराएंगे, लेकिन ख्याल रहे अगर क्लाइंट के सिग्नेचर से उसकी आइडेंटिटी रिवील होने का खदशा हो तो साइकोलॉजिस्ट को चाहिए कि वो क्लाइंट की एनोनिमिटी को मेंटेन करें. अगर साइकोलॉजिस्ट इलिटरेट पॉपुलेशन के साथ काम कर रहा हो तो ऐसी सूरत में वो उनसे ऑरल कॉन्सेंट लेगा. एलिमेंट्स ऑफ इन्फॉर्म कंसेंट. Following elements must be there in informed consent. First of all,
It should be in the language of the person or client so he or she may understand it. Consent should be according to the culture and norms of a person or group. A clear statement should be provided regarding the purpose and procedure of research or assessment. Participants or client must be aware of the risk and benefit associated with the research and assessment. Participant must also be aware if an alternative treatment or procedure will be available. Psychologists or researchers need to make sure that participants or clients' participation will be voluntary. If participants or clients need to ask a question, he or she should be provided with the information of a person to whom he or she will contact. Moreover, average time to research, therapy, or assessment will be discussed with the client. Participants or clients will also be assured that information taken from them will be kept confidential and will also be informed the concerned parties who will receive the data. If research or assessment involve a psychological risk, for example, when working with acid attack survivor or of domestic violence, a trigger to traumatic event may cause psychological harm or disturbance to the client. In such case, detail of alternative services should be provided to the client. Informed consent should also include a statement confirming that participants or clients are aware of their rights and agree to participate or continue with the session or research. However, pattern of informed consent and addition of any element can be expected according to the nature of consultation and cases. Standard 3.11 is related to psychological services delivered to or through organizations. This standards applies to psychologists when they are providing services to other organizations or delivering services through any organization. In doing so, they provide all required information to the client beforehand regarding the nature and objective of the services, the intended recipients, which of the individual are clients, the relationship the psychologist will have each person and organizations, clarify the probable use of services provided and information obtained. They will also clarify who will have access to the information and its limit of confidentiality. स्टैंडर्ड 3.11a में हमने देखा था कि साइकोलॉजिस्ट जब दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होगा तो उसको चाहिए कि वो अपने क्लाइंट्स को एज सून एज फिजिबल तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे और जो भी रिजल्ट्स हों वो क्लाइंट्स के साथ शेयर करे. Next, Standard Point 11b states that if psychologist will be precluded by law or by organizational rules from providing such information to particular individuals or group, they so inform those individuals or group at the outset of the service. यानी अगर साइकोलॉजिस्ट को लॉ तरफ से या जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम कर रहा है उसकी तरफ से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने से रोका गया है तो वो सर्विसेज के आगाज़ में ही अपने क्लाइंट्स को आगाह करेगा. दिस कंडीशन ऑल्सो अप्लाइज when informed consent is not required or mandated by law or other organizations. Standard 3.12 is related to interruption of psychological services. This standard says that unless otherwise covered by contract, psychologists make reasonable effort to plan for facilitating services in the event that psychological services are interrupted by factors such as psychologist illness, death, unavailability, relocation or retirement, or by clients or patient relocation or financial limitations. यानी जब साइकोलॉजिकल सर्विसेज कुछ अनफोर्सिन फैक्टर की वजह से इंटरप्ट हो जाएं, मसलन किसी बीमारी की वजह से, डेथ, रिटायरमेंट की वजह से या ट्रांसफ़र की वजह से इंटरप्ट हो जाएं, तो साइकोलॉजिस्ट को चाहिए कि वो फैसिलिटेटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए रीज़नेबल एफर्ट करें.
Interruption in psychological services can be planned and unplanned. Planned interruption can be when psychologists leave a job or join another organization regarding which he has prior knowledge. Whereas unplanned interruption can be due to unforeseen factors such as death, illness, or other related factors, etc. So, despite the best awareness of some factors, unpredictable events can be expected. So, psychologists need to make reasonable efforts. For example, they can discuss this interruption with the clients, they can conduct counseling before terminating the services, or they can refer the client to practitioners, keeping the confidentiality of clients. Students, so far we discussed 12 substandards related to Ethical Standard 3 Human Relation in Lesson 6 and 7. In the next lecture, we will discuss Ethical Standard 4 Privacy and Confidentiality. Till then, take a good care of yourself. Allah Hafiz.